कमिंग बैक टू योर एक्सपीरियंस भैया, आपका सबसे गंदा एक्सपीरियंस क्या रहा वो तो मैंने सुन लिया आपसे। आपका सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस कौन सा रहा रैली के अंदर? Again, all experiences are amazing. Every rally has a different taste to it. बट इन टर्म्स ऑफ आपको क्या होता है कि व्हेन यू हैव डन 200 प्लस रैलीज, आई एम श्योर देयर वुड बी अ फ्यू ऑफ दोस रैलीज जहां पे आपको एक बड़ी फुलफिल्ड सी फीलिंग आई होगी, यार यहाँ पे आई नो आई ड्रोव वेल एंड आई वन। Yeah. See, I'm sure you've had many victories also. yeah. I loved one of the good fast events in down south. It's called Dakshin. So I won that rally 4 years in a row. So yeah, of course, that was like, I was very confident every year that no problem, we can do it. And we had a fantastic service team with us and fantastically prepared vehicles. Okay. That is one. And then one of the Nagaland events I won long back. That was also good. तो आपने जितनी रैलीज करी आपके नेविगेटर सेम ही थे? See, we try not to change because once you are tuned up. So I think in my whole career, I might be having 3 or maximum 4 co-drivers in my 35 years of experience. And what were you driving in this one, Dakshin Day? I was driving Gypsy for 3 years, and then final year I drove a Brezza. That's again what Maruti decided to give me. I recently had spoken to Aman Aluwalia also about, because I call him the king of Gypsy king. उसका काम भी he works also a lot on gypsies and he's driven gypsies a lot. So he has a very fantastic thing and a fascinating thing to say about gypsy. He's like, आराध्य और कोई भी गाड़ी तू ले ले, and अगर gypsy, once you take an air in the gypsy, it is the only car कि once it is in the air you don't know how it will land. Rest all other cars are predictable. Gypsy has a mind of its own. You have to adjust to the vehicle. That is with every vehicle, but yeah, Gypsy has a mind of its own. It can land आपके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हो जहाँ पे कि हाँ you were like कि अब बस अब भगवान भरोसे, मुझे नहीं पता ये कैसे पहुंचेगी? Lot of times. You don't even have possibly a count of that. Yeah. One of the Chikmagalur rallies, we flew in a Gypsy, and that time I had a very senior co-driver with me, C.K. Chinappa. Okay. And when we flew, the only thing we could see on our front windscreen was a coconut tree. And then my co-driver, he's like, oh God. But when we landed, it was again on the road and all fine. We won that event again. I remember earlier you were talking about a couple of drivers, like you spoke about Sebastian Loeb. आप जाके मिले भी थे आप एक बार उनसे. I would want to know, I'm sure there are 2-3 those drivers at a global level that you really look up to, or even at the level of Indian rallying. वो कौन है? Who are those drivers and why do you look up to them? What is it about their driving? Indian rallying now, Gaurav is the best, and Amit Rajit is also doing pretty well. And a couple of new drivers are also there. Yeah. But these are all new guys, fairly new guys, considering you are a veteran rallyist. And see, when I started, I had senior teammates like Hari Singh. We used to look up to him during those times. Hari was there, Nikhil was there. I've heard a lot of good things about Hari Bhaiya. I really want to meet him because I remember Aman बहुत ज़्यादा mention करा था about Hari Singh. He also looks up to Hari Singh. No, he's been a pioneer in the motorsport, and again, once into motorsport, you cannot leave it. Some way or the other, he's still attached to motorsports. अब मुझे ही देख लो ना, मुझे मालूम है कि मैं ज़्यादा गाड़ी चला नहीं पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं I'm talking to more people about automobiles. At those times, whenever we needed any help or anything, he was always there. I'm glad that I was a part of his team during my starting of the career. But then even later on also he was guiding us whenever we needed him. Who was your inspiration when you entered rallying? I'm sure कुछ वो 1-2 लोग होंगे जिनको देख के आपने कहा यार एक दिन ना. I think these guys only, Nikhil, Hari, Dicky, these 3-4 guys were rallying at that time. And Leela was there in down south, but we never met him that much during the earlier days. But yes, later on we were all friends and teammates. Then he prepared cars for us, Leela. And back that time जब आपने रैली स्टार्ट करी, उस टाइम ग्लोबल लेवल पे तो इवेंट्स का कोई प्रोजेक्शन इंडिया में होता नहीं होगा या होता था? WRC और no, only the guys who were rallying that time, only they knew about rallying abroad, but nobody used to go that. मतलब कहीं पे दिखा नहीं रहे थे, not even on TVs or anything. Like अब तो ये है कि WRC देखने को मिल जाता है टीवी पे. I was telling that time the thing that for 5 minutes it used to come every Sunday, the World of Sports on DD channel. Only in that 5 minutes they used to show different rallies or something. Sometimes Indian rallying. We used to watch
We used to wait the whole week for those 2-3 minutes of clip. So two things Via I wanted to understand from you. Actually consider it as a question. Looking at your past experience of I don't know how many hundreds of rallies. कि आज की डेट में जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि मोटर स्पोर्ट्स का इंडिया में जो सिनारियो है सक्सेस नहीं कैच कर पा रहे, तो उसका क्या रीज़न है आपके हिसाब से? देखो मोटर स्पोर्ट का, एज आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर आल्सो विद यू ऑफहैंड, एक तो थोड़ा सा यह है कि किसी भी स्पोर्ट का मीडिया वाइज होना बहुत ज़रूरी है. उसमें मीडिया, स्पॉन्सर एंड कवरेज, न्यूज़ चैनल और एनी काइंड ऑफ मीडिया which is covering and showing it to people. उनका इंटरेस्ट कब बढ़ेगा? जब आप उसको दिखाओगे और देख नहीं पा रहे. तो मोटर स्पोर्ट के साथ थोड़ा सा ये लैक हो जाता है कि हम उसको टोटली मीडिया वाइज नहीं कर पाते, एक एक सेकंड की न्यूज़ नहीं दे पाते. तो हम ब्रेक्स में दे देते हैं कि भी आज सुबह ये था, दोपहर में ये था, शाम को ये था. अब उसी तरह रेसिंग में चलो थोड़ा सा अच्छा है कि रेसिंग इज इन अ क्लोज सर्किट इवेंट, इन अ लाइक इन अ स्टेडियम काइंड ऑफ अ सेटअप. वहाँ पे हम उसको एक एक सेकंड की खबर दे सकते हैं कि ये ड्राइवर ये कर रहा है, ये टीम ये कर रही है, इस गाड़ी के साथ ये हुआ. उसमें इंटरेस्ट देखो बढ़ा, जैसे F1 में बढ़ा, या उसी टाइप की मोटो जीपी जैसे अभी आ रही है इंडिया में. तो जितना आप मीडिया वाइज करोगे किसी भी स्पोर्ट में, वो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है. तो इसीलिए मोटर स्पोर्ट की कुछ फॉर्म्स हैं जैसे रैलिंग वगैरह है, वो इतनी ज़्यादा फेमस इसलिए नहीं हो पाती कि हम उसको सेकंड बाय सेकंड या मिनट बाय मिनट मीडिया वाइज नहीं कर पा रहे उसको. बट डू यू थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ जैसे क्लोज सर्किट जो रेसिंग होती है, जैसे फार्मूला 1 है, तो फार्मूला 1 की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो शायद इसीलिए मीडिया कंपनीज आर ऑल्सो वांटिंग टू पार्टिसिपेट इन दैट. एंड फैन फॉलोइंग उसी बात पे आ गए ना, वो क्रिएट करेगी. कैसे क्रिएट करेगी? आपका इंटरेस्ट बढ़ाया. आपका इंटरेस्ट कैसे बना? क्योंकि आपको हर सेकंड का, हर ड्राइवर का पता है कौन क्या कर रहा है. आपको यही नहीं पता कि संदीप गया उसने क्या किया, दूसरा गया उसने क्या किया, तीसरा गया उसने क्या किया. वो शाम को पता लगेगा जी क्या किया सारा दिन. तो वो इसलिए इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है उस चीज में. एंड डू यू ऑल्सो थिंक दैट कहीं ना कहीं मीडिया इज अंडरस्टैंडिंग मोटर स्पोर्ट्स रॉन्गली? No, I don't think so. They know everything. The only thing is again, it's a limitation of a sport. It's the nature of that sport that it has to be like this. And now in connection to that, my second question is कि अगर, and जो कि मैंने आपको बताया था कि I asked Aman also the same question, I'll ask you कि for example if you are made the main person behind motorsports in India, what are the changes that you would do to make motorsports more successful and a more rewarding profession in India? Wow, the most difficult, but yes, I would want all the fraternity to come together. First of all, like all the media, all the sponsors, all the competitors. अगर ये सब इकट्ठे होके कुछ करें, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, आई डोंट केयर कि ये लेवल है, ये लेवल है, ये बजट है, ये वो है, ये मीडिया का बंदा है, या ये ड्राइवर का लेवल है, किसी भी फॉर्म में हो, अगर ये सब लोग इकट्ठे होके कुछ करें, कोई ऐसे इवेंट्स प्लान करें, और ऑफ कोर्स मीडिया को तो लेना ही पड़ेगा. And then second thing आती है sponsor, then thirdly the drivers, and then the event organizers. तो अगर ये सब मिलके कुछ करें तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट को हम ऊपर ले जा सकते हैं. And of course, and not end, but yes, with the help of the government too. क्योंकि अभी जो last couple of I should say sports ministers या उसमें जो भी आए हैं, they are young and dynamic and they are open towards motorsports, which I have seen, which nobody was explaining it earlier to them. I think अपनी फेडरेशन ने भी उसमें काम किया है, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने काम किया है, and तो काम तो हो रहा है इस फील्ड में, ऐसा नहीं है. I mean, I'm considering अब FMSCI जैसी बॉडी है, yes, और लोग FMSCI का पार्ट बन रहे हैं, उसके रूल्स और डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो है. एंड आई थिंक आल्सो कंसीडरिंग कि आंसरिंग टू योर क्वेश्चन इज, अगर मुझे बनाया जाए तो मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इकट्ठा करके इस स्पोर्ट को बढ़ाया. मतलब you would not dictate, but you would rather facilitate. I would rather want everybody to come together and promote this.
And also, I think considering कि अब MotoGP, when is MotoGP happening? September. It's next couple of months, September. Yeah. So considering MotoGP जैसी चीज अब इंडिया में आ रही है, so and that also government supported. Exactly. So which is a right step. You know, we should take it positively. So internally हम आपस में कुछ ये करें जी, हमने ये करना है, तुमने वो करना है, ईगो को साइड रखें, कोई चीज़ कंट्री में आ रही है तो उसको वेलकम करें, वो इस टाइप का थोड़ा माइंडसेट चाहिए हमको. Talking to people like you is always a pleasure. I mean, I think we've been talking for the last 1.5 hours or something, but I think वो भी बहुत कम है. As in when we continue talking. No, we'll continue this, whenever we get a chance, and probably next racing venue. Absolutely, because see, this is what I am next also training trying venue to, probably. Correct. कुछ भी हो सकता है. This is what I'm trying to bring out to people, to the viewers across our nation, that you know what, motorsports is a sport and automobiles in general is a very strong passion to have. And उस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और जितनी बाकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो कि आप कह रहे थे कि सबको इकट्ठा करके हम करना चाहेंगे, तो दैट विल बी ग्रेट थिंग टू डू. प्लस OEMs का सपोर्ट रहे, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट. That's like when I said sponsors, it includes all of them. Absolutely. It includes any, small to biggest, supporter or in a sponsor. Absolutely. In any form. Yeah. But pleasure talking to you, Bhaiya. Same here. Let's continue this conversation. Sure. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Yeah.